I can subsume many of the things and represent things abstractly and then say that my agent is rational. But when it comes to real world, that rational agent won't be able to take rational decisions because you are you are assuming a lot of things, you are abstracting a lot of representations and then representing that particular agent. Okay, so we'll talk about this, I guess, later. The 10 minutes are there. I did not know what the time is. Okay, so thinking rationally is another thing. So several Greek schools developed various forms of logic. ये कहाँ कब हुआ था? ग्रीक्स जब बहुत ज्यादा परिष्कृत कम्युनिटी होते थे इन अर्ली सेंचुरीज, ये बहुत डेट बैक करता है अर्ली सेंचुरीज को. इसमें नोटेशंस और रूल्स डिराइव किए थे टू रिप्रेजेंट थॉट प्रोसेस. ओके, तो ये मैकेनिज्म यूज करके डायरेक्ट लाइन थ्रू मैथमेटिक्स एंड फिलोसॉफी टू मॉडर्न एआई. एआई को डिजाइन करने के लिए अगर आप रूल्स ऑफ थॉट्स को यूज कर रहे हो तो वो जो आप एआई डेवलप करोगे यूजिंग दोज रूल्स ऑफ थॉट्स, that will be an AI that can think rationally or that follows the laws of thoughts. Okay, इसमें issues क्या है? Not all intelligent behavior is mediated by logic deliberation. जो भी intelligent behavior human में है वो logical deliberation के बाद ही आप decision लेते हो, ऐसा नहीं है. For instance, there are many involuntarily actions that we do. Okay, these involuntarily actions that are bodily present in our physical body as well as our mental makeup, okay, they are not always governed by the logical deliberation. They are there, they are embedded into us. For instance, जैसे मैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा वाले टेम्परेचर एरिया में चला जाता हूँ, पर्स्पिरेशन शुरू होता है. पर्स्पिरेशन किस लिए होता है? टू कीप माई बॉडी टेम्परेचर lower, to make my body temperature lower, right? ये जो चीजें ये अनवॉलंटरी होते हैं. There are many involuntary systems in our body as well. So if you look inside, you will see lot of things which actually are very difficult to understand, very difficult to put into the logical model of thought process. Okay, what are the purposes of thinking? What are the purposes of thinking? What thoughts should I have? Yeah, ये जो है ये second problem मैंने पहले ही बता दिया था. क्या क्या चीजें मेरे थॉट प्रोसेस पे रखनी चाहिए, कौन कौन सी चीजों के बारे में मेरे पास कॉग्निजेंस होना चाहिए सो दैट आई विल बी ऑलवेज रैशनल, और किस चीजों का कॉग्निजेंस नहीं होना चाहिए सो दैट माय नॉलेज बेस जो बड़ा होते जाएगा. सी देखो, थॉट प्रोसेस नॉलेज जो है ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये करने के लिए मेरे पास नॉलेज बेस होना चाहिए. As I start capturing everything in the universe and start keeping it in knowledge base, मेरा नॉलेज बेस बढ़ने लगता है साइज में और फॉर्म में. ओके, और वो डायनामिक होते जाता है. वो जितना डायनामिक होगा मेरे रीजनिंग रूल्स जो है और मेरा रीजनिंग एबिलिटीज जो है वो रीजन करके क्या करता है, इस नॉलेज बेस में नया नॉलेज क्रिएट करता है. इट क्रिएट्स न्यू नॉलेज एंड आई कीप दैट नॉलेज बैक. ये हमने शुरू में लेक्चर में देखा था, इफ यू रिमेंबर. ओके, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनिंग. रीजनिंग प्रोसेस क्या करता है? रीजनिंग प्रोसेस एक एल्गोरिदम की तरह है जो नॉलेज बेस से नॉलेज उठाता है, परसेप्ट जो मेरे पास है वो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करता है, और दोनों को मिक्स मैच करके सम वे यूजिंग दीज रूल्स which are predetermined, it produces new knowledge, and that new knowledge is again kept in the knowledge base. If I keep on doing this, what I'm going to do is increase my knowledge base. Now when I say that I don't know what all things come in my environment, it's very difficult to understand what is there and what is not there in the environment. ये particular चीज के वजह से you will suggest that you have a knowledge base that is a universal knowledge base. Universal यानी आप जस्ट इन्वायरमेंट के लिए लिमिटेड मत रखो, सभी चीजों को कलेक्ट करना शुरू करो एज अ नॉलेज. व्हाट विल हैपन? knowledge base will become fatter and fatter. Now for a particular task, अगर मुझे कुछ information चाहिए so that I can reason, it will be now coming to me in a larger turnaround time. ना मैं क्वेरी करूंगा नॉलेज बेस को, वहां से कुछ नॉलेज मेरे पास आएगा, फिर मैं उसको यूज करूंगा in my reasoning algorithm to reason out things, maybe using forward chaining or maybe using backward chaining. We learn all this stuff, don't worry about this, just understand this cycle of processing. जब मैं rational behavior चाहता हूं तो मुझे logical representation use करने पड़ेंगे. To have logical representation and use this
representation of thought model using logic. Okay, what I create is a knowledge base and a reasoning algorithm. That is what I require. How these things work, whatever percepts are coming to me, I will try to represent them into the logic that I have chosen. Logic is the representation language, by the way. So I'll represent them into the logic that I have chosen. वो सेंटेंसेस या वो इंफॉर्मेशन जब मैंने लॉजिक में स्टोर किया, तो वो इंफॉर्मेशन प्लस जो मुझे चाहिए, जो मेरे पास एक्सपीरियंस के तौर पे है इन दी नॉलेज बेस, आई विल फेच दैट, आई विल क्वेरी द नॉलेज बेस. और रीजनिंग का पार्ट जो है, रीजनिंग का एल्गोरिथम ये सब करेगा. जो भी मुझे चाहिए वो मैंने फेच किया. मेरे पास कुछ चीजें हैं जो मेरा करंट नॉलेज है, ये दोनों को मिला के यूजिंग सर्टेन एल्गोरिथमिक स्टेप्स आई विल प्रोड्यूस सर्टेन न्यू नॉलेज. what will I do with that knowledge? Using that knowledge I will reason कौन सा एक्शन करना चाहिए. मेरा आज का काम खत्म हो गया, बाद में क्या करूंगा, ये नया नॉलेज में स्टोर बैक करूंगा नॉलेज बेस में. आई विल बी इंक्रीजिंग द साइज ऑफ नॉलेज बेस दिस वे. एंड व्हेन आई एम सेइंग दैट कि मैं यूनिवर्सल नॉलेज बेस क्रिएट करूं, तो नॉलेज बेस में बहुत ज्यादा आइटम्स आ गए. तो जब मैं मेरा इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन पिक करने की कोशिश करूंगा बहुत बड़े कलेक्शन से, तो आज जो हमारा और आपका हो रहा है, जब हम गूगल करते हैं मुझे बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिलता है, लेकिन उसमें से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन कौन सा है वो चूज करने में ही नॉलेज बेस रीजनिंग एल्गोरिथम वेस्टेज ऑफ टाइम करने लगेगा. एंड अल्टीमेटली मैं रैशनल बनूंगा, लेकिन मैं बहुत स्लो बन जाऊंगा. सो बीइंग रैशनल विल बी देयर, दैट प्रॉपर्टी विल बी देयर, बट since I will not be able to take actions in the time duration where I had to take those actions, I will not still be a rational being. So that is the counter argument in this school of thought. Okay, कि आप rational हो सकते हो लेकिन limited way में. Okay, you will not be considered rational if you don't take your actions in timely manner. Sometimes even the reflexes that you give, they are pretty much needed. Sometimes you do not at all require rationality. जैसे इमेज प्रोसेसिंग है, आप जब कोई सीन देखते हो और उससे कुछ मतलब निकालते हो, वो मतलब हर एक बंदा अलग अलग निकालता है, मैंने पहले ही आपको बताया. वैसे ही हर एक बंदा उस चीज को उसी इंटेंसिटी से आइडेंटिफाई नहीं करता. फॉर इंस्टेंस कलर शेड्स. Okay, if I try to explain you a color shade, or I ask you to explain a color shade, everybody will have a different conception of that color shade. Okay, किसी को वो बहुत डार्क लगेगा, किसी को वो लाइट लगेगा, क्योंकि उसका डार्क का परसेप्शन अलग है. Okay, so there is always a fuzziness in these representation, which is very hard to capture using traditional logics. So you have something called as fuzzy logic, and you might learn, so that is called as soft computing. That area of study is called as soft computing. So you do imprecise calculation, or you allow the algorithms to have imprecise calculation. Even the machine learning algorithms, the statistical algorithms that we have nowadays, which are there in machine learning as well as deep learning, they do imprecise calculation. We allow them to have behave imprecisely, because many a times being precise or being accurate is not what you require. Rather, you require to solve the problem. Okay, so there is always a give and take that way. Okay, someday you'll understand what I just said. It might be that at this point in time you might get confused. So for understanding to the point, rationality means you should always be able to take optimal decision, and that optimal decision will always be there if you are following rules of logic, because logic is the basis for thinking rationally. Okay, rationally thinking करने के लिए logical agent or logic based reasoning is what is prescribed by the people who did the research in this particular field. Okay, now acting rationally, rational behavior would mean what? Doing the right thing. The right thing would be that is a thing that is expected to maximize goal achievement given the available information. ये important चीज है. जितना मेरे पास information है उसमें मैं maximize करना चाहिए goal achievement को. That is called as being a rational behavior. So ये जो है ये action से related है. Okay, doesn't necessarily involve thinking. Thinking के बिना भी ये हो सकता है. Reflexes जो है, जो मैंने आपको बताया, many a time reflexes can also be rational.
Okay, so that is an important thing. That's another school of thought. We should not say that AI is a system which is acting like human, which should act rationally. Okay, so that's another school of thought. Okay, so rational agents. So this, for this we require the agent abstraction. So we'll stop here. You can put your roll numbers in